Just during 44 days, we have liberated over 300 cities and villages. We have been chasing away our enemies and getting new lines line by line. सामने आया है वो, जैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परसों भी कहा कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले भी और उसके बाद भी 2 दफ़ा उन्होंने बात की है कि हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि देखिए आइनी तरामीम इन ऐवानों का जमहूरी हक होता है। जमहूरियत हमारे लिए और हमेशा हर ऐवान के लिए, ख़ास तौर से वो ऐवान जो सारे अकाइयों की ज़िम्मेदारी लेता है, उनके हुकूक़ का ज़ामिन होता है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सब के हुकूक़ का ज़ामिन हैं और हालात को तरक्की को देखते हुए मुल्क में हालात को फिर भी जो आपके प्रेशर्स हैं, मैं जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, मैं उसकी I bring you the sincerest regards of 86 million people. On this proud day of ours, I believe that our brothers and sisters in the organization of Turkic states are also sharing the same enthusiasm with us. May our victory be blessed. May Allah grant Azerbaijan and the Turkic world many more victories. I thank all the representatives from friendly countries who are with us today, especially my brother, Prime Minister Shehbaz of Pakistan, who shares Azerbaijan's happiness. My brothers and sisters, today we are celebrating the 5th anniversary of a magnificent and tremendous victory that put an end to a 30-year occupation. I once again commemorate with mercy all our martyrs who fell in the homeland war, the brave sons of Azerbaijan. May Allah bless the souls of our martyrs and grant them paradise. One of the symbolic names of Azerbaijani literature, Mehmet Aras, described the Azerbaijani Turks' love for homeland as follows. Today, every moment of ours should say homeland. Our sword, our shield should say homeland. Well, instead of the fallen, the remaining ones should say homeland. Every feeling of our heart, every single emphasis, accent should say homeland. No matter where we are, our time, our place should say homeland. I express my gratitude to our heroic veterans whose hearts always beat for the homeland. And I pray that Allah is pleased with them, and we thank them. I congratulate once again all members of the Azerbaijani armed forces who ended the 30-year occupation with their epic struggle at the cost of their lives. In like manner, I sincerely congratulate my brother Ilham Aliyev, the architect and leader of this great victory, and wish him continued and lasting success. I would like you to know that the liberation of Karabakh is not only a source of pride for Azerbaijan, but also for the entire Turkic world. Every single step taken by the Azerbaijani army on the soil of Karabakh and every single drop of blood shed for independence and honor
has been inscribed in gold letters in our shared history as a badge of honor in the history of the Turkic world. Today, Azerbaijan soldiers stand shoulder to shoulder, side by side with their brothers from Turkey. When we look at our soldiers, we can all see what the motto "Two states, one nation" means. The flag of freedom rising on the blood of our martyrs waves with honor, pride, and glory all over Karabakh. As you know, 45 days ago, we bid farewell to a great poet who was originally from Karabakh. Merhum, the late Yavuz Bülent Bakiler, expressed his longing for Karabakh with the following lines. I can enter your soil with flags. I'm longing for Karabakh. Like lovers, I can die for Karabakh. If everything ends one day without me seeing Karabakh, I don't want bands or big wreaths. I only ask Allah to give my soul some peace. Well, just let a few handful of blessed soil of Karabakh be sprinkled over me. Poets wrote such poems filled with longing for Karabakh for years. Under the resolute, determined leadership of my brother Ilham, the Azerbaijani army liberated Karabakh from occupation and put an end to the fire burning in the hearts of people for 30 years. It's thanks to Allah today, from Lachin to Shusha, from Zangilan to Hankendi, and from Hocalı to Fuzuli, there's peace, there's development, there's prosperity and freedom in every single soil, piece of land of Karabakh. Inshallah, this climate of peace and security will continue to strengthen. My valuable friends, distinguished guests, the Karabakh victory not only ended a great injustice that wounded consciences, but also opened doors to a new era in our region. The homeland war also changed the geopolitical balances in Asia and Europe. We neither hold grudges nor allow the pains of the past to be repeated. Therefore, we consider this victory not as an end, but as a milestone on the road to lasting peace in the Caucasus. We believe that the establishment of peace in the Caucasus will serve the prosperity of the entire region, from Asia to Europe. I would especially like to emphasize one point here. We're very hopeful and optimistic about lasting peace. We appreciate the sincere efforts of my brother Ilham Aliyev for the establishment of lasting peace. We're also happy to see the courageous steps taken by Prime Minister Pashinyan of Armenia. Inshallah, this tremendous victory will result in a lasting agreement that will consolidate peace and tranquility in the region, thanks to the constructive attitude of both leaders. As Turkey,
we will continue to do whatever is required of us in this regard. At this point, we take pride in the progress achieved by Azerbaijan, both in its region and beyond. Our exceptional relations are strengthened every day with concrete and strategic projects. As you will remember, we crowned our cooperation with the Azeri Çırak Güneşli project of the century and the Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline, Shahdeniz and Tanap. So we crowned our cooperation with these projects and further reinforced it with the commissioning of the Iğdır-Nahçıvan natural gas pipeline. We're now striving to take this cooperation further and expand its scope. We hope that the new routes to be established in the Caucasus will increase transportation and energy transmission opportunities. We need to further develop the east-west middle corridor crossing the Caspian Sea with investments for the benefit of all our brothers and sisters. I believe that we will take much further steps together with Azerbaijan to use the Baku-Tbilisi-Kars railway line in the most efficient way. Distinguished brothers and sisters, Azerbaijan is making great efforts for the reconstruction of the region, especially Karabakh, the safe return of the people, and the restoration of destroyed cultural and religious heritage. Together with my brother Ilham and my brother Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we visited parts of Karabakh. I personally witnessed the mobilization for development and investment throughout Karabakh after the victory. I saw on-site airports, roads, bridges, tunnels, railways, houses, rising buildings, agricultural and transportation projects. Under the leadership of my brother Ilham, I closely observed what dear Azerbaijan can achieve. Once again, I say, MashaAllah, Barakallah. Of course, what we have seen is just the beginning. Inshallah, more will follow. With its magnificent beauty, Karabakh will once again become the shining star of the region. During this process, we will provide all the required support to Azerbaijan. In addition to our bilateral cooperation with Azerbaijan, we also continue our unity and solidarity within the Organization of Turkic States. With the participation of all members of our family council at the highest level, we held our 12th summit in Gebele in October. I'm pleased that the decision I called for at the summit, the declaration of December 15th as World Turkic Language Day, has been enforced by UNESCO.
Our solidarity with Azerbaijan will, inshallah, gain even more momentum during Azerbaijan's term presidency of the organization. I wish Azerbaijan every success in all the work to be conducted. With the unwavering support of Azerbaijan, I hope the position of the Turkish Republic of Northern Cyprus within the Turkic world will be strengthened. May Allah help and protect us. With these thoughts, I once again commemorate with mercy our martyrs who watered the land with their blood in the homeland war and express my gratitude to our veterans. Likewise, I once again remember and commemorate with gratitude all the martyrs of the Caucasian Islamic Army who liberated Baku from occupation in 1918, especially Ghazi Namdar Shehid Ala Enver Pasha and his brother Nuri Killigil Pasha. So I remember and commemorate them once again with gratitude. Taking this opportunity, I sincerely congratulate your 19th November State Flag Day. I greet you all with my most heartfelt feelings. Thank you, and may Allah protect you. बाकू में अज़रबैजान के यौम फ़तह की तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अज़रबैजान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बेहद खुश हूँ। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबन जमीआ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। My dear brother, President Ilham Aliyev, my dear brother, President Rajab Tayyib Erdogan, my dear brother Sheikh Hamdan Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, UAE, heroic personnel of the armed forces of Azerbaijan, my Azerbaijani brothers and sisters, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am grateful to my dear brother President Ilham Aliyev for his gracious invitation and the warm hospitality extended to me and my delegation on this joyous occasion. I bring with me the heartfelt greetings of the people of Pakistan who equally share the pride and joy of their Azerbaijani brothers and sisters on this historic day, celebrating the 5th anniversary of the glorious victory in the 44-day patriotic war. Ladies and gentlemen, Pakistan, Azerbaijan and Turkey, three brothers whose hearts beat together, are present here today along with our brothers from UAE, standing shoulder to shoulder,
celebrating this momentous occasion. And what a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. Ladies and gentlemen, I am also reminded of the Azerbaijani and Turkish military contingents that proudly marched alongside the Pakistani armed forces in Islamabad amid tremendous applause on the 14th of August this year, when we celebrated Marka-e-Haq to commemorate our historic victory in the four-day war with India. I vividly recall memories of my own childhood. Ladies and gentlemen, I recall my good old memories of my childhood when my late father shared stories of the struggle and sacrifice of our forefathers and their conviction and self-belief that led to the creation of Pakistan in 1947. Today, as I witness your radiant faces and shining eyes, those cherished childhood memories are being refreshed in my mind. Ladies and gentlemen, our national poet, Dr. Allama Muhammad Iqbal, a guiding light of our freedom struggle, beautifully expressed in a poetic verse, and I quote, "गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें." Iqbal says, and I translate in English, in bondage, neither swords nor strategies work. They fail, they don't work. But when the fire of conviction awakens, then all chains of bondage are shattered, are cut. This is what Iqbal said decades ago. And these timeless words remind us that freedom is not won by force alone, but it is unwavering belief and commitment that breathes life into such heroic struggles. Ladies and gentlemen, 5 years ago, the courageous sons of Azerbaijan, under the bold and visionary leadership of my dear brother President Ilham Aliyev, rose to respond to the call of history. The world witnessed in awe as Azerbaijan's brave armed forces liberated their ancestral lands of majestic Karabakh. Throughout this entire struggle for liberation, Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan, and will stand with our brothers and sisters in Azerbaijan for all time to come. Honorable guests, Azerbaijan's victory in Karabakh was a glorious vindication of a just and a fair cause, a beacon of hope for all nations around the globe striving for sovereignty and self-determination, including the brave and resilient people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. This year, the entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the four-day war with India in May this year. Under
the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. Our ever vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. Indeed, Pakistan, like our Azerbaijani and Turkish brothers, seeks peace, but let there be no doubt at all that no one can ever be allowed to challenge our sovereignty or undermine our territorial integrity. Ladies and gentlemen, today as we celebrate the past, we also look to the future with great hopes and aspirations. It is heartening to see the return of displaced families to their homes in Karabakh. My dear brother, Mr. President, it is also a great testament to your personal strong commitment to the welfare and progress of the people of Azerbaijan. The astounding speed of reconstruction under your leadership, Mr. President, in Shusha, the jewel of Karabakh, Khan Kendi, Fuzuli, Lachin, and all across the liberated territories of Karabakh is absolutely phenomenal and beyond imagination. Also, one of the most successful models of development is found in present-day Turkey, whose architect is none other than my dear brother President Recep Tayyip Erdogan, who is also here as one of our very honorable guests to witness this great ceremony. I must express my sincere admiration for his visionary leadership that has transformed Turkey into a modern, progressive, strategic, and economic world power. Ladies and gentlemen, true victories lies not on the battlefield alone, but in building bridges of peace and understanding. My dear brother President Ilham Aliyev, I deeply admire your sagacious leadership that guided Azerbaijan on the difficult journey leading to peace with dignity and mutual respect between Azerbaijan and Armenia. Having secured a resounding military victory in Karabakh, Mr. President, you have now won peace through your outstanding, skillful diplomacy. Here, I must acknowledge and appreciate President Donald Trump for his exemplary leadership that culminated in the success of these peace efforts. It was President Trump's bold and decisive leadership that brought about the ceasefire between Pakistan and India, restoring peace in South Asia, averting a major war, and saving millions of people. Ladies and gentlemen, our common resolve for peace has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan, along with the state of Qatar. This is a true reflection of the strong and time-tested fraternal ties between our countries that stand together through thick and thin. Ladies and gentlemen, while we celebrate victory today, we must also remember the fallen. May Allah rest the souls of the martyrs of this glorious struggle of Azerbaijan, who laid their life to reclaim their ancestral land
with their blood and invaluable sacrifices. Their courage, fortitude, and sacrifice wrote an immortal chapter in annals of history that will continue to inspire generations for all time to come. And today, as the beautiful Khari Bulbul flowers bloom across the liberated lands of Karabakh, nurtured by the soil and enriched with the blood and sacrifice of those brave sons and daughters, they bring the glad tidings of peace and hope. May Allah Almighty grant our great nations the strength to continue marching resolutely towards a promising future of progress and prosperity. Pakistan, Azerbaijan Dosti Zindabad. Pakistan, Azerbaijan, Turkey, UAE Dosti Paindabad. Thank you all. Khuda Hafiz. वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मसौदा सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी का इजलास। तरमीम पर बहस। 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज के ढांचे में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा देने की तजवीज़। आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट कार्नेक मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। वफाकी हुकूमत मज़कूरा ओहदों की जिम्मेदारियां और मुराद रियासती मफाद में तयन करेगी। हुकूमत का जजेस तबादलों पर बहस हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम में जजेस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्रुरी में वज़ीर-ए-आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। मुसव्वदे के मुताबिक आइन के आर्टिकल 42 और 59 में तरमीम। आइन के आर्टिकल 63(1)(5) में लफ्ज़ सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। नई अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने से अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आईनी अदालत के फैसले होंगे। मुल्क के वसीतर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रजामंदी पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगजी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों के वफूद के हमरा बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मसौदे की भरपूर तायद की। एमएल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
मीसाके जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ। जजेस के तबादलों पर गुज़िश्ता दिनों खासी बहस हो रही थी। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द करने की तजवीज़ है। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हमें कोई जल्दी नहीं, अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार है। कमेटी में दीगर अरकान को भी मदऊ करेंगे जो कमेटी के रुकन नहीं है। बिल पर वोट अभी नहीं होगा। अपोजिशन से बहस का आगाज करेंगे। 2/3 अक्सरियत से तरमीम पास करेंगे तो आइन का हिस्सा बनेगी। वज़ीर कानून के खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन को कमेटी इजलास में शमूलियत का मशवरा, कहा कि कोई आम कमेटी नहीं, अपोजिशन को तजवीज़ दूंगा, इसमें जरूर शरीक हूँ। 27वीं तरमीम का मसवदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को ना भेजें, ऐवान बाला को ही कमेटी तस्वुर किया जाए, यहीं पर बहस करा लें। सेनेटर अली जफर की चेयरमैन सेनेट को तजवीज़, कहा हमने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा अभी तक नहीं पढ़ा। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल मंजूर कराने की जल्दी है। जब तक हम मसवदे को पढ़ न लें इस पर बहस नहीं कर सकते। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये तरमीम इत्तफाक राय के बगैर ऐवान में पेश की जा रही है। हम इस तरमीम के बाद पाकिस्तान के लोगों को कैसे इकट्ठा रखेंगे? 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई वो सब ने देखा। रेफरेंडम करा लें, अवाम 26वीं तरमीम को मुस्तरद करेंगे। ये तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देंगी। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की तकर्री का भी मुतालबा। इसहाक डार ने जवाब दिया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। ये मामला चैम्बर में हल होना है, तकारीर से नहीं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान में इंतखाबी हल्कों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई काबीना को हुजूम में भी इजाफा किया जाएगा। एक वक्त में सेनेट इलेक्शन कराने की तरमीम शामिल। आर्टिकल 93 में तरमीम। वज़ीर-ए-आज़म को 7 मशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़ीर आला के मशीरों की तादाद बढ़ेगी। आर्टिकल 186 और 191 से हज़फ करने की तजवीज़। आर्टिकल 176 से 183 तक तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से उनका इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वर होगा। 27वीं आईनी तरमीम में मुतादिद शिकों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात बरकरार। आर्टिकल 160 के शिक 3A सूबे के शेयर्स कम करने पर इख्तलाफ। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 वापस करने की तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं किया गया। तालीम और आबादी का सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने से मुत्तफिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक विफाक की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की मुखालफत। आर्टिकल 63 1 और C में तरमीम पर एतराज़। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इख्तियारात से मुतालिक आर्टिकल 175 और शिक 3 में तब्दीली से भी मुत्तफिक नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहदे दो तरफा मुआहदों की पासदारी में नाकाम रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगान वक्त चाहता था उसका जुबानी एतबार किया जाए जिसकी गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसी हिसाब से रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का दौरा। यौम फतह की मरकजी तकरीब में शरीक। फौजी जवानों की परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलीयुफ ने शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज तकरीब में आए जिस पर बहुत खुशी हुई। तुर्क सदर का भी खैर मकदम करते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान और तुर्किया के फौजी दस्ते तकरीब में खुसूसी तौर पर